Good morning, classes. How are you all? I hope you all are fine and reading, revising all the things at homes. Very good. So, this is our EVS activity class. Which class is it? EVS activity. So, today we will do some activity related to our organs. Related to our organs. The organs which are present inside our body means वो organs जो हमारी body के inside present होते हैं. आज हम उससे related कुछ activity करेंगे. So all of you, firstly you have to listen to all my instructions. Okay beta? So first listen to me carefully what I am teaching, what I am going to explain you, and also remember the things which I am going to teach you. It will also helpful in your further studies. So first of all, do you know what are internal organs? Yes, what are internal organs? The organs which are present inside our body means जो organ हमारी body के inside होते हैं और जिनको हम देख नहीं सकते वो क्या होते हैं हमारे internal organs होते हैं. कौन से organs होते हैं? Internal. So now today we are going to do some activity. What is activity? Yes. Now I am going to tell you some numbers. Going to tell you some numbers. You have to remember it and then I will ask it again. Now the numbers are 4, 27, 99 and 100. What are the numbers? 4, 27, 99 and then 100. So now you have listen to the numbers what I have taught. Yes, the numbers are 4, 27, 99 and 100. Now I will going to tell you some words. Further I have telling you the numbers. Now I am going to tell you some words. पहले तो मैंने आपको कुछ नंबर्स बताए. अब क्या बताऊंगी मैं आपको? कुछ वर्ड्स जो कि आपको रिमेंबर करने हैं. जैसे कि प्ले. व्हाट द वर्ड फर्स्ट वर्ड इज? प्ले. सेकेंड वर्ड इज सिंग. व्हाट्स द थर्ड वर्ड? Dance. And the last word is study. So what is the first word? Play. Sing. Dance. And then fourth word is study. So how many words I have taught you? 4 words. How many? 4. And what are the numbers? 4, 27, 99, 99 and the last number is 100. What is it? 100. So how many numbers? 4. And how many words? 4. Now I have given you 4 numbers and 4 words. Now what you people have to do, now close your eyes. All of you, close your eyes. Done beta? Now think about the numbers and the words which I have given you earlier. मैंने जो जो आपको numbers और words बताए वो सब आप अपनी eyes close करें और अपने उसको just सोचें. Close your eyes and think about the numbers which I have taught you. Yes. Done beta? Close your eyes. Yes, all of you. Now, think about the numbers which I have told you. How many numbers I have told you? Yes, tell me. Now open your eyes and tell me how many numbers I have told you. Yes. Yes. How many? 4 numbers. What are those? 4, 27, 99
and the last word is 100. So how many numbers I have told you? 4 numbers. You have closed your eyes and you have think. How many numbers I have told you? 4 numbers. And now again close your eyes and remember about the words which I have given you. Now again close your eyes and remember about the words which I have given you. Yes, how many words? Now all of you close your eyes. I am also closing my eyes. I am also thinking in my mind. Yes, how many numbers? 4. Now open your eyes. How many numbers I have told you? 4. What are those? Play, sing, dance, and the last word is study. So, how many numbers? 4 numbers. So, you have closed your eyes and you have think about the numbers and the words which I have given you. You have, where do you think it? Yes, with the help of which thing? Which organ? You think. Yes, it's the very important part of our body. Yes, it gives instructions what to do and what to not do. It's our brain. What is it? It's our brain. This whole portion is our brain inside this skull. What is this? Bony box. ये जो है बोनी बॉक्स है, इसके अंदर सारी बोन्स हैं और इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है? हमारा ब्रेन, जिससे हम सोचते हैं. क्या करते हैं? सोचते हैं कि अब हमें क्या काम करना है और अब हमें क्या नहीं करना है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज आवर, look into this picture all of you. What is this? This is our brain. This is present inside our skull. This is present inside our skull. This is called brain. What is this beta? Brain. So, ये क्या है पिक्चर? ये ब्रेन है. ये कहाँ होता है? ये हमारे इधर होता है, इस पोर्शन में. कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्कल के अंदर. ये जो है ऊपर का पोर्शन, ये हमारा स्कल होता है और इस स्कल के अंदर क्या होता है? हमारा ब्रेन. ये क्या है पिक्चर? ब्रेन की. किसकी पिक्चर है बेटा? ब्रेन की. तो ये ब्रेन क्या है? ये हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है. All of you understand what is brain? Yes. Now again see this picture. What is this? This is brain. What is this beta? Brain. Now we have studied about the internal organ brain. Now we will do again some further activity. Now keep your hand on your chest like this. Keep your hand on your chest. Yes. Now start the counting from 1 to 10. From counting number 1 to 10. Now put your hand here. All of you put your hand here. And now start the counting from 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 10. How many countings we have done? Now remove your hand. How many countings we have done? We have counting done 10. हमने क्या करा? अपना हाथ यहाँ पर रखा अपने हार्ट के पास और काउंटिंग कहाँ तक करी? 10 तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो हमने यहाँ से क्या महसूस करी? What do we feel? Yes, we feel our heartbeat. What we feel? Heartbeat. Now start jumping. All of you start jumping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How many times we have jumped? 10 times. How many? Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How many times we have done jumping?
10 times. Now again put your hand on your heart. Now again feel your heartbeat. You are feeling your heartbeat? Yes. What is it? Our heartbeat. हमारी heartbeat यानी हमारी धड़कन. जब हम नॉर्मल बैठे हुए थे तो हमारी हार्टबीट नॉर्मल थी यानी साइलेंट थी. अब हमने जंपिंग करी 10 टाइम्स तो हमारी हार्टबीट क्या हो गई? तेज हो गई. क्या हो गई बेटा? स्पीड अप हो गई हमारी हार्टबीट. नाउ फील योर हार्टबीट हियर. माय हार्टबीट इज वेरी इंक्रीजिंग. Your heartbeat is also increasing. Why? Because in first time you are standing silently and feeling your heartbeat. It is normal. But after jumping 10 times, you feel your heartbeat. It's increased. Then normal. वो normal से तेज हो गई. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने क्या करा? जंपिंग करी. क्या करा बेटा? जंपिंग. तो इससे हमारी हार्टबीट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. नाउ ये तो हो गई हमारी हार्टबीट. अब हमने हार्टबीट को अपनी चेक करा. वो नॉर्मल से तेज हो गई. पहले तो वो नॉर्मल थी जब हमने 10 तक काउंटिंग यहाँ पे हाथ रख के करी. जब हम स्टैंड पोजीशन पे थे तो वो नॉर्मल थी. लेकिन after jumping for 10 times our heartbeat increased. What is heartbeat? Our heartbeat increased. Why? Because we had done some work. हमने क्या करा? हमने जंपिंग करी. हमारी बॉडी ने एक्सरसाइज करी तो हमारी जो हार्टबीट थी वो इंक्रीज हो गई. क्या हो गई? इंक्रीज. सो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा हार्ट होता है उसके थ्रू हम पता चला सकते हैं कि कब हमारी हार्टबीट नॉर्मल है और कब वो तेज हो गई. जब हम स्टिल पोजीशन में होंगे, हम कोई काम नहीं कर रहे होंगे तो हमारी हार्टबीट नॉर्मल होगी. लेकिन जब हम वर्किंग मोड पे होंगे यानी हम कोई काम कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, लाइक आई एम प्लेइंग, लाइक आई एम जंपिंग, my heartbeat gets increased. So how can we feel our heartbeat? हम अपनी हार्टबीट क्यों फील कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट. क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हार्ट. व्हाट इज दिस? दिस इज हार्ट विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर चेस्ट. जो हमारी चेस्ट के अंदर होता है. इसकी हेल्प से ही हम अपनी हार्टबीट को महसूस कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं बेटा? महसूस. ये क्या है हमारा? हार्ट. क्या है बेटा? HEART. हार्ट. सो अभी हमने क्या देखा? जब हमने काउंटिंग करी 10 तक हमने अपने ब्रेन से सोचा कि आईज क्लोज करी. हमने अपने ब्रेन में सोचा कि वो नंबर्स क्या क्या थे. तो हमने किसके थ्रू सोचा? अपने ब्रेन के थ्रू. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब हमने नॉर्मल हम खड़े थे साइलेंटली तो हमारी हार्टबीट नॉर्मल थी. लेकिन जब हमने जंप करना शुरू करा तो हमारी हार्टबीट इंक्रीज हो गई. इससे क्या पता चला हमें? कि हमारे हार्ट जो होता है उसकी हार्टबीट्स इंक्रीज हो जाती हैं जब हम कोई काम करते हैं तो इससे हमें क्या पता चला कि ये हमारी बॉडी के क्या हैं? इंटरनल ऑर्गन्स हैं. ये हमारी बॉडी के कहाँ होती हैं? अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये दिखते नहीं हैं. सो in this video I have explained you about our internal organs. So now what you all have to do, watch the video carefully and try to do this activity at your homes and make a short video of it and send it to me. Okay, so goodbye class. Bye bye children.